is here. So this is I think it must be a very lively session, the last session. You are feeling little tired, but you will see that how the time passes and you will enjoy this. We start. Anybody start? Yeah. So you're all aware of our DG sir, Dr. Himanshu Pathak. Briefly, sir, I will talk about a little bit. Lots They of know me more than me. yes. Gracious, sir. Yeah, Dr. Himanshu Pathak, you know that at present he is our DG, and he was born in West Bengal on अच्छा ये बताना चाह बेटा लोग किसका या पेज बताना graduated from Banaras University and the post-graduation PhD also from IRI. So we are really proud, sir. And then sir joined, he went for University of Essex, United Kingdom, for from 1996 to 1997. Institute of Meteorology and Climate Research in Germany for 1 year. And then he remained senior scientist at IRI. And he was the co-facilitator of Rice Wheat Consortium for Indo-Gangetic Plains, International Rice Research Institute, India. And principal scientist at IRI from 2009 to 2016. And he was also a professor in the discipline of environmental sciences at IRI. And then he became director at a National Rice Research Institute, Cuttack, Odisha, from 2016 to 20. And then he moved to Baramati, National Institute of Abiotic Stress Management, Pune, Maharashtra. And so many awards are bestowed upon him. And I just will name a few: Rafi Ahmed Kidwai Award, the Indian Science Congress Association Young Scientist Award, and DST Boys Coast Fellowship. And then he also was Indian Society of Soil Science Golden Jubilee Commemoration Young Scientist Award, Alexander von Humboldt Fellowship from 2004 to 2005, ERI Outstanding Administrative Support Award in 2007. And then he is also advisory board member from 2015 to date in Greenhouse Gases Science and Technology from, he was an editor and also chief editor to many of the international publishers and journals, and Vice President Society for Advancement of Rice Research, Indian Institute of Rice Research, Hyderabad, from 2017 till date, and many other awards. And he's editor for Frontier Science, Technology and Applications, and then editor Agricultural Systems Engineer from 2020 till date. So there are many laurels, sir, to you, and a lot of inspiration we get from you. So, sir, it's over to you, and you will enjoy his talks. Good. So I will be going that side. लेकिन एक तो जैसे मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं कुछ सही में पढ़ाने के लिए कुछ रहा नहीं है, तो ऐसे टाइम पास ही करना. So the point is, I know from morning you have been very busy. Very tired. I didn't see you in the morning. They can mark me. So nothing is serious. In fact, the whole teaching process is not serious. So why don't you understand it in a simple way, and you are ready to explain to the students in a simple way. कुछ लोग जानबूझ के इसको डिफिकल्ट बना देते हैं, सबको लगे कि ये सबकी बस की बात है, तो आप लोग आसान है, लेकिन उसको ऐसा घुमा फिरा के बताएंगे कि लगेगा क्या. एक आइंस्टाइन का बड़ा अच्छा कोट है. He says most of the problems in the world are because of so many intelligent many fact. जो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है ना, वो हर एक चीज को कॉम्प्लिकेटेड वे में सोचता है. This is the brain's, this is science actually. Intelligent brain will think a subject in a difficult, complex. उनको लगता ही नहीं है कि आसान है.
उसको उस तरीके से एनालिसिस करें and then they will make it complex. So otherwise it is actually simple. आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा, अक्षय कुमार का एक मूवी है, उसमें वो एक कोई मेरे ख्याल रग्बी मैच हो रहा है, और उनकी टीम जो है वो प्लेयर नहीं था पहले, उनको तो किसी ने खेलने दिया नहीं, बाहर बैठे रहो एंड दे आर यूजिंग। तो जब हारी रहा था तो लास्ट में लोगों को याद आया कि भैया जब हारी रहा है तो इनको भी बुला लेते हैं, उनको बुलाया गया, उनको गेम का रूल पता है, क्या मुझे ये बताइए करना क्या। कहता है पहले रूल तो समझ लोगे, रूल मत समझाओ, तो गेम चल रहा है, समय भी ज्यादा नहीं है, जस्ट टेल मी करना क्या है। कहते हैं दिस इज द बॉल, इस बॉल को उधार जो दो पोल्स नहीं दिख रहे वहां तक पहुंचाना है, मुझे बस इतना ही करना है ना। कहते हैं वो बाकी सारा बहुत रूल्स है इसके अंदर, कहते वो तो भूल जाओ, आपने मुझे बता दिया माय जॉब इज इस बॉल को मैं यहाँ से उठा करके उस बॉल तक मुझे पहुंचाना, इतना है ना। तो सर वो भागने में बड़ा तेज था उसमें, तो जैसे बॉल जाए इधर उधर भागते भागते जाके उस बॉल को गेम जीत गया। तो लोग आश्चर्य हो गए कि भाई इनको ना रूल पता है ना कुछ पता है, लेकिन काम हो गया। तो अगर एक काम ही करना है, किसी को उतना ही समझना है कि हमें काम कर देना है, अगर हमारा ये काम है कि स्टूडेंट्स को समझा देना है कि आप बताना क्या चाहते हैं, तो देन द जॉब इज डन। लेकिन अगर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा घुमाना है, गुमराह करना है, अपना इंटेलिजेंस दिखाना है, हाउ मच आई नो एंड हाउ मच यू डू नॉट नो, ये भी एक अबिलिटी बोल रहा है। Then the teaching is very complex. So what we shall discuss today is something very simple. ना सिंपल कि आपको लगेगा कि अरे ये चीज सब बना, ये पढ़ने के लिए हम यहाँ क्यों बैठे हैं? बस बेटर टू वर्क डाउन समवेयर एंड देन हैव अ कप ऑफ टी। इन चाय तो अपने जरूर कई कप पी होंगे ना, इसलिए वो ज़्यादा कुछ करने का नहीं। So we'll be discuss some of this. Everything you know, there is absolutely no point of explaining. But then few things I shall try to say, which probably you not have thought in that. हम सब जानते हैं, लेकिन हो सकता है उसको उस तरीके से हमने सोचा नहीं होगा, and that's why probably we have got different meaning of things. We shall discuss why to teach and why to learn. Now, this is the first question which was asked when all these schools and everything was started. एकदम जब civilization शुरू हुआ, maybe around 5,000 years back. So this is the first question which was asked: why to learn? Now, even today also, we have not answered this question paper. Why to learn? And nowadays, no, everybody is very, very particular about their objective. If you cannot explain to me what for I will be doing this, that is the most difficult one. एक बॉम्बे IIT का क्लास, मुंबई IIT स्टूडेंट्स को जा रहा हूँ, जब गया है तो बात है। So class was going on and a very reputed teacher was taking the class. उस क्लास में more than 90% of the students, they were playing with their all students are intelligent. Teacher was very reputed, fantastic, but 90% was busy with this. Nobody was listening to the lecture. So when the lecture was over, somebody asked the students, why did you do this? इतना इंटरेस्टिंग क्लास और आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट हो, अभी आप लोगों ने किसी ने क्लास के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया, आप लोग गेम खेल रहे, तो they get very can you see what is our object? हमें एक बीटेक की डिग्री लेनी है, उसके बाद हमें एमबीए करना है। एमबीए के लिए हमें कैट का एग्जाम देना है। कैट के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियर का
और इंटरनेट के बाद हमें पता नहीं क्या करना है, कहीं बैंक में नौकरी करना है, कहीं वैकेंसी में करना है, कहीं और कहीं करना है। तो देन टेल मी, अगर हमें जाके कैट की तैयारी करके एमबीए में एडमिशन लेना है जिसमें एक भी क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नहीं आ रहे, why I should be wasting my time to learn mechanical engineering? with engineer बना ही नहीं है। Then what for you are here? केवल मुंबई आईआईटी की डिग्री चाहिए, उसके लिए अगर 50% मार्क्स पास हो जाता है, I do not want 51%. 50% is pass mark, I want exactly 50%, ताकि मैं फेल ना हो। इसके बाद वाला जो टाइम है वो मैं इसमें वेस्ट नहीं करूँ। That time I will be spending to prepare for CAT. मुझे उसमें अच्छा रैंकिंग आ जाए, उसमें परसेंटाइल 99 point something आ जाए, then I get good MBA कॉलेज में कहीं आ जाए, एबीसी में आ जाए। There is ABC in MBA. ABC में कहीं हो जाए, तो that's what we want. So you really have to answer why to learn. Whenever you enter into a class, you have to answer. That is, you should know the answer why students should learn this. यही हमारे पास क्लियर नहीं है, then the whole process is lost. And then why to teach? These are all very simple questions, but then really तो उस तरीके से कभी पूछा नहीं है सोचा नहीं, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं हो तो आप स्टूडेंट्स को ब्लेम करते रह जाएंगे, कोई पढ़ने आपसे नहीं है। उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, वो तो वही कुछ करना चाहते हैं। And you are trying to teach him all biotechnology and soil science and agricultural physics and I don't know what kind of thing, but there is something. Now then there is a process of communication. Actually teaching is a process of communication. And communication is a science and also an art. अब science क्या है that I should say. Art क्या है that cannot be taught. वो तो आप सबको समझना पड़ेगा कि इसका आर्ट क्या है। But that's how the teaching process evolved. All of you should know much about it. How to become an effective teacher. Now this is the question, fourth one. Generally सबको लगता है कि effective teacher बनाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, ये तो born होते हैं। If somebody is a good teacher, that means he or she is a good teacher. ये पढ़ के कोई टीचर नहीं बन सकते, ट्रेनिंग दे करके कोई अच्छे टीचर नहीं बन सकते, but that's I don't think. कुछ चीजें हैं जो ट्रेनिंग परफेक्ट हो सकते हैं, आप नहीं होंगे, but then you can improve a lot by learning and training. And those are again very simple, very simple. या अगर उस तरीके से हमने कभी सोचा होता तो हो सकता है काफी टीचिंग प्रोसेस आज तक आसान हो गया। हमने उस तरीके से इसको बताया नहीं, समझाया। And then of course how to become an effective learner. आप सबको I know noticing everybody. So whether you are a good learner or not a good learner, that will be assessed. And I hope that you are a good learner. जाएगा? अच्छा, your job is this? You deal with them in contact for some time. He's a very good player, volleyball, in what? Football, yes. So I know them quite well. That's what I know. But I didn't know that you were master of Gujarat. What does it? Oh, that's when I left, you learned several other things. Good. Okay, so why to learn? So learn to learn. First point, all of us. मैंने लिखने का जरूरत नहीं था, तब भी मेरे साथ लिखी दो। You understand. But then learn to learn. Actually, Indian civilization में education started with the second point.
not learn to earn, but learn to learn. सीखने के लिए सीखना है. खुद के लिए. All our saints, मुनि ऋषि जितने भी हैं वो उन लोगों को कभी नहीं सोचते किसको यूज करके हम पैसा कमाएंगे. Anyway, now also in many places, और 25-30 साल पहले तक तो यही था कि शिक्षा को बेचा नहीं जा सकता. That's what the philosophy was. इस शिक्षा को तो, but then reality is different. But that's not the philosophy. जो शिक्षक को मन करे दे दो, मांगना नहीं है. हाँ दे तभी चलेगा. And therefore, all the gurus of, mythology or whatever it is, they had the capacity to become king. They could defeat so many kings, but they didn't become king. They all spent their life simply by begging and begging. That was learn to learn. They were all very knowledgeable, but then they didn't earn or didn't sell their knowledge to earn back. But today is, of course, number one. This is, well, you can note it here. This will be somewhere at the end, but that's how it is. Learn to live. This is very important. Particularly आप जब बाहर जाते हैं ना, अपने घर में हो सकता है, then now also one must learn to live. तो बाहर जब जाते हैं तो all of us need to learn to live. This is not so easy. Think together with other people whom you do not know. It's not a simple task. काफी लोग अपना पूरा जिंदगी खत्म कर देते हैं, लेकिन तब भी लोगों के साथ रह नहीं पाते. एक कमरे में आजकल आजकल आ गए क्या उसको एक दो स्टूडेंट को रख दिया जाता है, तो अगले दिन कंप्लेन लेके आता है कि नहीं इनके साथ नहीं रह सकता. देखे कमरे में 6-7 जितना भी है. So we really do not know how to live. तो इस समय अगर एक कमरे में डबल बेड में दे दिया जाए दोनों को, जो डिस्टर्ब को बंद करना पड़ेगा या तो कहीं और से झगड़ा होता है. We have slowly used that. Learn to adapt. All the changes are happening, so you all must learn that. Learn to improve the society, the greater knowledge. Knowledge के बिना तो कुछ बनी. That we really need to. But then why to teach? These are all big words and all of you know that. Somehow, this is what Vivekananda used to tell everybody, that teaching is the profession that creates all other professions. इसका एक बड़ा ये है आयशर के साथ ना. Similar kind of statement had big history in Asia. आप लोगों को पता नहीं होगा. पहले आयशर साइंटिस्ट का ओलंपिक साइंटिस्ट में scale compared to bank or IS officials used to be much काफी कम. बैंक वाले भी हमसे काफी ज्यादा सैलरी लेते थे और सिविल सर्वेंट्स तो काफी होते. And then there was the committee. In that committee, vice chancellors were there and they put their argument कि हमारा सैलरी कम से कम जो सिविल सर्वेंट्स है उसके बराबर होना चाहिए. But government was not ready at all. नहीं आप IS है और आप लोग साइंटिस्ट के बराबर कैसे हो सके? हो ही नहीं सकता. So one of the vice chancellors said it in front of Dr. Manmohan Singh. Of course, in a philosophical way, he said that teachers can make one IS officer. But I have not heard of that any IS officer has made any teachers. Somehow that statement Dr. Manmohan Singh liked. Because he himself was a professor in Delhi School of Economics. Yeah. मैंने कहा कि आपका तो IS से नीचे तो नहीं. That was a decision immediately taken कि आपका सैलरी IS से नीचे तो नहीं होगा स्टार्टिंग में. और कितना होगा that we should discuss. That was a very big decision
At that point of time, now these are all of you know. The morning was also trying to say this one. You know this. And you know that also. Acha, I thought. Should be able to adjust. Or a smart boards will be closed. हाथ से छोटा कर दीजिए हाथ से छोटा कर दीजिए Squeeze, हाँ. डबल टाइप किया Good. So, have you heard of these four? You know. All these four? These four are the best and greatest examples of Guru Shishya. Guru, Shishya, his Shishya, and his Shishya. Socrates, his student was Plato, Plato's student was Aristotle, Aristotle's student was. And all four are greats. The चारों पीढ़ी तक not great. Of course, these three were philosophers. He was and then Alexander the Great was conqueror. But then all of them were. Probably this gentleman was the first philosopher to promote several of the ideas which nowadays we talk about. This democracy, free speech, all kinds of. This man was the one who could promote. You know how he died? Hemlock. Hemlock का क्या था उसमें? Hemlock is poison. Why he consumed hemlock? These are all interesting. He was his philosophy. Okay, democracy, free speech, youth should be promoted, all kinds of things. So the then king didn't like all. What is free speech? Because I am the king and whatever I say, that's what everybody should follow. So at the end, all kings, मंत्री सब मिल करके इनके खिलाफ सारा केस लेकर के आए और उन्होंने बताया कि अगर ये जिंदा रहा तो ये पूरा किंगडम तो आपका हाथ से आज नहीं तो कल जो है निकल जाएगी तो इनको तो आपको खत्म करना है या फिर इनको साइलेंस करना है. So he was punished. He was given option. The king's were also sometimes very great. वो भी बड़ा kind हो. इनको दो option दिया गया. Number one option that you tell everybody that whatever you have been saying so far, कोई ना आप अभी तक जो बोल रहे हैं वो सब गलत बोल रहे थे उसका कोई मतलब नहीं है उसको कोई फॉलो ना अगर आप ये बोल देते हैं तो आप छोड़ देंगे or else you have to die. He said, if I say this, that whatever I have been preaching till now is wrong, that will be more than death. I do not want to live that kind of situation. I will not be able to tolerate it or live with that. The second option is, then you have to die. He said, I would prefer to die because I do not know what happens after death. So maybe after death, the things are still better. मुझे आपने जो फर्स्ट ऑप्शन दे दिया है, that is such a difficult option. उसको लेके तो मैं say, let me do some experiments. Let me die and see what happens after death. So he had to die. But then again, kings are so great. कहते he was such a great man, philosopher. तो आप किस तरीके से मरना चाहेंगे वो तो हम आपको ऑप्शन देते हैं. Either we will be able to shoot him, kill him, something like that, or here is a poison. You consume it and then. So he did that, and then of course. Died, but his
student later, actually come later. अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं ना ये सब conference, symposium, workshop, some of these were his ideas. Again, his philosophies and his profession and everything was not liked by teacher. अब इस तरह के लोगों को कौन teacher पसंद करेगा? So what he used to, he and his sisters and everybody used to do that on certain days, they would go out of the city. इधर जो दूर दराज कहीं होगा वहां बैठ करके ये लोग अपना डिस्कस करेंगे. And that was what we call as nowadays conference or symposium. So that was the term symposium, and from there the symposium came where people will get together and will discuss on anything which could be against king or whatever it is, and that's what the symposium. And of course, then different forms of symposium came, but we shall discuss later. Of course, other two you know very well, but getting good guru is not so easy. इसलिए जो अच्छे गुरु है ना उनका फीस भी बहुत ज्यादा होता है. कहीं चैतन्य में इतना फीस है, नारायण में इतना, ब्रिलियंट में इतना, एंड व्हाट एल्स फिटजी में. तो जिसके बच्चे यंग है, all of you know that all these fees and everything. So getting good guru is not easy, but getting good sisha is also not easy. Rather, that is more difficult. These gentlemen, Dronacharya, how did he get Arjuna or Bhim and all others? He searched them. He searched all over the places to find his students. क्योंकि वो अच्छा स्टूडेंट नहीं होगा तो पढ़ा के फायदा क्या होगा? So he could do anything anywhere, like teachers, all of us. Then he was not. We searched all over the places and just searching students. And then those who know Mahabharata and those who have seen Mahabharata, we are Chopra. ये सारे जो भाई है ना, यूनिवर्सिटी दुर्योधन अर्जुन, जो एक बल की बात ना, कुएं में उस बल को कैसे उठाया, तो एक से डालते थोड़ा सा बना करके. So when this person Dronacharya watched this from a distance, तो उनको लगा कि बच्चों में दिमाग है, तभी उस बॉल को नीचे से बिना कुएं में उतरे जो है कि उसको निकाल पाया. So that means all of them are brilliant. So then he decided that these boys would be my students. And then he approached the king. मैं इन लोग को पढ़ना चाहता हूँ. So searching students. And then Ramakrishna Vivekananda, again, when first time Vivekananda met Ramakrishna, Ramakrishna said that I was waiting for you, but you did so late to come. I was only waiting for you. Before Vivekananda, many people, many disciples met Ramakrishna, but he didn't like all. None of them. When he met Vivekananda, he said, I was waiting for you. So searching students is another kind of thing. So these are some of the things. Teacher converts information into knowledge, and then students converts knowledge into wealth. That's what everybody has done. But then this is something you never to go. जिन लोगों ने कभी म्यूजिक सीखा है ना, किसी किसी म्यूजिक सीखा, I know theory knows it. Anybody who has, अपने, you play music or something, आपको गाना नहीं होगा, classical. Classical, no, very. Anybody else? What? Anybody else? No? Anyway, I'm not that the explanation, so you don't bother about me. देखो मुझे याद आया, वो कभी कुछ सीखने जाते, वो जब सिखाते ना, उनका ये कहना था, this is very very important. We really got this statement. He said, मुझे गुरु मत मान,
जिस दिन आपने इस तबला को गुरु मान लोगे ना, मैं आपको तो 2-3 ताल, 10 ताल, 15 ताल, ताल, झापताल ये सब बहुत सिखाऊंगा था कितना, 5, 10, 12, 13, 14, 15. But this tabla knows all the parts. ऐसा कोई ताल नहीं है जो इस तबले को नहीं आता. तो जिस दिन आप तबले को गुरु बना लोगे, उस दिन आपको गुरु से भी छुटकारा मिल जाएगा और आपका नॉलेज उस दिन कंप्लीट हो जाएगा. तो जिस दिन कोई हारमोनियम को गुरु बना लेगा, बात खत्म हो, फिर तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं. जो भी इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं, जो भी उस दिन जिस दिन आपने उसको गुरु बना लिया ना, तो फिर देन बिकॉज दैट्स व्हेयर एवरीथिंग इज देयर. चाहे वो फ्लूट हो, चाहे हारमोनियम हो, चाहे जो भी हो, एनीथिंग, तबला हो, व्हाटएवर इट इज, बिकॉज नो गुरु नोज as much that tabla knows. No guru knows as much that harmonium knows. उनका नॉलेज तो मतलब ही नहीं. So this is what, if we can really do that. Now again, education all of us. And I'm not going to give you definition, and I'm sure you are not going to write these things anytime in your life, at least now. But then what is education? Education means drawing out. सबके अंदर टैलेंट तो है, उसको बाहर कैसे लाया जाए, that's what the education is. What Einstein used to say, that everybody has got talent until you ask a fish to climb it. टैलेंट सब में है, लेकिन अगर आप एक मछली को पेड़ पे चढ़ने के लिए उसका एग्जाम लेना शुरू कर दिया, तो फिर मछली में आपको कुछ भी टैलेंट दिखेगा. तो उनका जो क्षेत्र है टैलेंट उसमें देख, मछली को पानी में उतरो, फिर देखो मछली की टैलेंट क्या है. लेकिन अगर आप मछली को बोल दिए पेड़ पे चढ़ के दिखाओ, वो चढ़ नहीं पाई, उनको अपने 0 मार्क्स देंगे. और ये कह दिया, एकदम डिक्लेयर कर दिया that मछली has got no talent. Because you have put this in totally different things. वहाँ तो freely नहीं है वो. जिसका freely नहीं है तो उसमें talent कहाँ से आया? So that's drawing out. And then this is another important thing which we do not follow. If you are graduated yesterday and stop learning today, you become uneducated. Most of us actually has become that. And that is more in our ideas. Record कर रहे हैं क्या? होता क्या है ना, हमने वो MSc पेज तक जो पढ़ लिया पढ़, उसके बाद only few of us study. बाकी हमने पढ़ना है, तो नौकरी हो रहा है, सीखे आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ना, इसका मतलब हमने पढ़ाई छोड़ दिया है आज से 30 साल पहले. किसने 30 साल होगा, किसने 15 साल होगा, किसने 10 साल. लेकिन पढ़ाई हम छोड़, और अगर पढ़ाई हमने छोड़ दिया 15 साल पहले, then today you are unemployed. Whatever claim we make, we are unemployed. क्योंकि हमें तो डेली पढ़ना नहीं है, हमें तो डेली पढ़ना चाहिए, जो हम नहीं करते. And of course again, Vivekananda used to say education is the manifestation of perfection in, and everything is there, but education will make you perfect. This sloka, of course, all of you know, Prabhupada is so knowledgeable in Sanskrit. You know what is teaching? So it is actually very simple. Very, very simple if you understand the science of it and little bit the art of it. It is basically communication. Communicating a message. The second part is important. Art of communicating a message with impact on students. The impact wala nahi bataun, but communication. Now, what is communication? All of you know.
हो सकता है एक पेज का इसका राइट बिग स्टोरी अबाउट. But the communication, there is a very simple word. Communication originates from Latin word commune. Commune means something in common. What does it mean? Something in common means communication जब मैंने किया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और मेरी अंडरस्टैंडिंग दिस बिकम्स कॉमन. आप भी जो समझ रहे हैं मैं भी वही समझ रहा हूं, तो फिर वो कम्युनिकेशन हुआ. ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ही कुछ है और मैं और ही कुछ समझता हूं उस चीज को. दैट मींस देयर इज नथिंग इन कॉमन. एंड इफ देयर इज नथिंग इन कॉमन so there is no communication, nil communication, and most of the time we do that. No communication. मुझे लगता है कि 1 घंटा में लेक्चर देके चला गया, लेक्चर भी खत्म हो गया, but then after that lecture is there anything common? ऐसा कोई चीज है जो स्टूडेंट और टीचर दोनों का अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बराबर हो, और वही नहीं हो पाया तो फिर तो ना कॉमन चीज रहा, ना कम्यून हुआ, ना कम्युनिकेशन हुआ. Nothing is happening. And then of course sending and receiving those kinds of things. Little bit question again, why to communicate all of you? And let me tell you, human being is the, of course we say we are the best creatures. Certainly we are. We are best creature because of, there is only one trait which has made us best out of all the creatures in this universe. That is our communications. बाकी एनिमल इतना अच्छे तरीके से communication तो भी करते हैं, but then not the way, not this efficient as human being can. The communication से हमने सबको हरा रखा है. Because we could tell you what you should do, what you should not do. Others could not make such kind of move. And then, of course, social job, promotion, deal, and of course, nowadays, this is the era of communication. So that picture has now become something like this. ऐसे शुरू करते करते लगभग घूमते घूमते और पहले हम थोड़ा खड़े रहते थे सीधे, अब वो सिद्धार्थ को गिरा. Next, you do not know where we will be lending ourselves. This is not just for the sake of poor communications. Poor communications kill. Let me do one practical. जब भी हम लोग कहीं किसी इंटरव्यू में जाते हैं ना, and this you can take directly from me. इसलिए कुछ दिनों से इंटरव्यू नहीं करते हैं. बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, इंटरव्यू ही कर रहे थे. And in one trait, जिसमें कम से कम आपको 50-60% मार्क्स इंटरव्यू में कम से कम आ जाता है. इसका कम्युनिकेशन ठीक ठाक है. He or she is going to be looking for. बाकी बहुत नॉलेज लेकर के आप बैठे हुए हैं, लेकिन आप बोर्ड को समझा ही नहीं पाया कहना क्या चाहता. मैं तो समझ नहीं पाया कि आपका जवाब क्या है. अगर मुझे समझ में नहीं आया, मार्क्स तो मुझे देना है. आपको तो यू नो एवरीथिंग, बट सो व्हाट, यू कुड नॉट tell me what I wanted to know. वो कॉमन हुआ नहीं ना, कम्यून नहीं हुआ, कम्युनिकेशन नहीं. Therefore, you do not get it. बाद में क्या हम ये सोच सकते हैं कि मैंने सारा जवाब तो दे दिया था, ये तो थे, लेकिन क्या उनको समझ में आया था जिसको आपने जवाब देकर के आए? उनको समझ में नहीं आया था, then आपका जवाब का कोई मतलब नहीं. अगर लिख के देते तो हो सकता है आपको 10 में से 10 मिल जाए, लेकिन आप ऐसे कुछ बोल के आ गए, आपको लगा कि मैंने तो सब कुछ बोल दिया, लेकिन जिन्होंने सुना उनको हो सकता है 5% समझ में आया, 10% आया, 50% आया, 100% को समझ भी नहीं आया, तो फिर वो उनको लगा कि आपको नहीं लगा. दिस इज सो इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ.
They are the communicators. I thought दुनिया में सबसे few best of the communicators. That could be many. This is not a complete list. There could be hundreds, thousands others. But let me give you two very distinct examples. This man. This was fascinating. Okay. It is not that person. Because he is Hitler, that's why task is because of smart screen, this is task. This man, people say that he was the greatest student. Germans were not fools. Germans were educated even in 1939 also. When the Second World War started. And they are all nice, good human beings. Why they will be executing Jews who have been their neighbors and friends and relatives for so long? Why they will be Jews? But the way he used to explain, there are several books on it. Germans कहते थे कि जब ये कहीं मीटिंग बुलाते थे, and it will be back. हम सब ने ये सोच के जाते थे कि इस बार हिटलर का बात नहीं माने might be doing something wrong. हम सोच के जाते थे इस बार इनका बात नहीं मानना. But then this fellow will stand up and he will start his oration. और लास्ट में सबको क्या हो जाएगा पता नहीं. All of them will agree to what he said. And they will be ready to. That's oration. That's communication. He wrote a very good book. Also is that means my struggle. It's quite voluminous book. 500 pages. So, I shall give you an example of this. How communication. But then, this is my direct example. When I was a student here, मेरा फ्रेंड का तबीयत खराब तो गंगाराम हॉस्पिटल में he had to be admitted. So I was और रात में किसी को रहना होता है ना तो that was my job. तो फ्रेंड तो सो गए उनके बगल वाले बेड में there was a सरदार quite old, around 85-90 years. So initially he was sleeping. लेकिन after जब 12-1 बजे तो my friend was asleep and I was reading something. उनका नींद सरदार उन्होंने देखा कि बगल वाले उस बेड सा जस्ट साइड बाय साइड बगल में मैं बैठा हुआ. So he asked me कहाँ से है. And then somehow बातों में आ गया कि whether I have heard about post. लेकिन तो हम स्टूडेंट लाइफ से पढ़ते आ रहे हैं, all kinds of. Then he said that I have worked with Subhash. The moment somebody says that he or she has worked with Subhash Chandra Bose, then automatically you become almost instantly attracted to that person. Hey, here is somebody who has worked with such a great man. That fellow said he was in Germany working as a laborer. And he heard one day that Subhash Bose is coming and he is asking Indians there to fight against British. तो कई मैदान में सब इकट्ठे हुए, करीब 4-5 हजार लोग वहां एकत्रित हुए वहां और कई सारे नेता थे, 10-12 लोग थे और सब एक करके आए, भाषण दिए और लास्ट में सबने कहा कि आप बताइए हमारे साथ इस लड़ाई में कौन लड़ने जाएंगे. तो किसी के लेक्चर के बाद 10 लोगों ने हाथ खड़ा किया, किसी के बाद 15 ने किया, किसी के बाद 20 ने किया. मतलब the response was very good. दोनों लगे तो कोई मतलब ही नहीं है, आपने 10-15 लोग लेकर के क्या इसके लिए उसमें लड़ना भी आसान बात थोड़ी है. Then at the end he came for his
Sardar ji said, I do not remember exactly what he said. But then at the end, जितने भी लोग उस मैदान में थे, हम सब खड़े हो गए, saying that we are waiting. So what he said, I do not remember, but all of us stood and raised both of our hands, saying, we are waiting. Now that's communication. That's oration. And this man had totally different kind of communications. गांधी जी का ऐसा कई बार हुआ है, काफी लोग उसको सुनने के लिए आए हुए हैं, इलाकों में है, तो वो भी 4-5 पहले नेता ने तो सब एक करके बोले, everybody is waiting to listen from गांधी। सबका भाषण से जब खत्म हो जाएगा, what गांधी जी will do, he will simply stand up, केवल नमस्ते करेंगे और चल देंगे। Not a single word, not in every sabha, but in many sabhas, will not say a single word. People used to ask, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? सब तो आपको सुनने के लिए आए थे, हम तो बेमतलब पहले तो जो पिलर नहीं है, हम तो पिलर का काम कर रहे थे, हमारी बात सुनने के लिए कोई छोड़ी यहाँ है, तो सब आपको सुनने के लिए आए हुए थे, और आपने एक शब्द भी नहीं बोले, आप चल दिए केवल नमस्ते करते हुए। कहते मेरा जो काम था वो उसे एक नमस्ते नहीं हो गया है, मुझे केवल इतना इन लोगों को कहना था कि हम सब एक साथ लड़ रहे हैं। So when I say namaste and they said namaste, that means it is agreed. Communication is 100% complete. मैं जो बोलना चाहता था उन्होंने समझ लिया और उन्होंने उसी नमस्ते से मुझे कह दिया कि yes, we are waiting. तो जब कम्युनिकेशन 100% कंप्लीट हो गया तो फिर मुझे इतना बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर देके उनका समय खराब करने का क्या जरूरत है, मेरा समय खराब करने का क्या जरूरत है, let us go somewhere else, जिनको समझ में नहीं आया। So that is also one kind of communication. So communication doesn't need all the time speaking. It could be done in a totally different. And another communication is, कभी आप लोगों ने उनका वॉइस सुना है? I don't know how many of you. अच्छा, ये सबका वॉइस आप लोगों ने सुना है कहीं ना कहीं आजकल के जमाने में। Of course, you have got all these YouTubes and all this. You know who is he? No. उनका नहीं सुना? But then you know, I think हम सुना है सर। एजुकेशन को छोड़ के हिस्ट्री में ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। कभी मौका मिले तो आई रीड अबाउट दिस विंस्टन चर्चिल, यू नो, कोट किया जाता है लोगों का, मैंने अभी आइंस्टाइन का 2-3 कोट कर दिया, महात्मा गांधी का एक, बोस का एक, बड़े बड़े। दुनिया में सबसे ज्यादा कोट किया जाता है विंस्टन चर्चिल। He was a Nobel laureate. He fought World War I and also II. He was the architect of winning World War II for UK US. But he got Nobel Prize not for peace, in literature. Most of the witty and मजाक जिसको कहा जाता है ना, जो कोट्स है वो सारा इनका है। So I can spend maybe another 2-3 hours of putting his quotes, but then that is for some other day. आज के लिए नहीं। But anyway, I just wanted to give you some examples of oration, communication, and those kinds of things. But then communication and effective communication. हम जब टीचिंग का बात करते हैं तो our teaching should be effective, not simply teaching. Effective is what is. Effective is a success based on audience outcome. Teaching is a success based on students outcome. वो एक टीचर बहुत अच्छा बोलते हैं,
his vocabulary is very strong and his, everything, knowledge is very sound. But then if it doesn't have any impact on the students, then that has got no use. So that not did the presenter like it or audience like it, but did it have any impact? कि आपका लेक्चर सुनने के बाद किसी के मन में कुछ बदलाव आया या स्टूडेंट ने जाके अपना पढ़ाई थोड़ा सा और ज्यादा किया और कुछ किया, if it is done, then it is effective. If it is not done, then miscommunication is a big problem. And generally when people are in stress, there is miscommunication. Interview में miscommunication ज़्यादा, because you are in a different situation, or you are in totally different kind of environment. और उस समय आपको लगता है कि मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, but then you are saying something different, or communication से miscommunication ज़्यादा. So my words came out fine. They were processed incorrectly by your brain. That is your analysis. But when your words didn't come fine, and because of miscommunication, is all that is misunderstood or left unsaid, upon which prejudice are made. जो कहा नहीं क्या है या जो गलत तरीके से कम्युनिकेट हुआ है, उसी से ज्यादा प्रॉब्लम होता है. And this is also a fact. This bombing in Hiroshima and Nagasaki. There are a number of examples. Miscommunication से क्या होता है? US was not ready to drop the bomb because they are all sensible people. तो पता था कि एटम बम का मतलब क्या? Why they will be killing lakhs and lakhs of innocent people? So both of them, UK and again Churchill, and they came out with a proposal to Japan. You please surrender. Japan by that time understood that we are not going to win this war. So they were considering to surrender. Their internal meetings. They were almost ready to surrender. So the proposal was given whether to surrender, or if you do not surrender, you are going to face utter destruction. Bomb will be put. He said in his own way, Japan's Prime Minister, it is of course a Japanese word, meaning no comment. Now, no comment, what he actually meant, that we are considering it, we shall give you comment maybe tomorrow or day after. That's what actually he meant. That immediately I cannot give you the comment. I will be giving my comment tomorrow or day after. That's what actually, but what they understood, or the way these fellows spoke, कि आपने जो सुझाव दिया है, that is not even worthy of a comment. तो जिसके पास आप प्रस्ताव लेके गए हैं, वो कहते हैं आपका प्रस्ताव तो कमेंट का लायक भी नहीं है, तो फिर क्या करना है उसमें? तो समझ गया कि जापान मानने वाला नहीं है, and then the things were different. Similarly, something happened in Vietnam War and so on. Forget about this. Now, this effective communication होता कैसे? Message, messenger, media, and mass. These are different types of communication. It happens like this. So there is a message, and there is a person to deliver that message, which is called as messenger. Now the messenger will use some media to be delivered to the mass or students, and then they will receive this. That's how the whole process is. Very easy to understand.
ये पूरा प्रोसेस एक मैसेज है, कोई मैसेंजर है, टीचर इज द मैसेंजर, एक मीडिया है, अब मीडिया could be dish on or portal or maybe blackboard or whiteboard or green board or whatever it is, which will be given to the students, so marks go to the students and then the student receive the message and that's how the whole process goes. But the problem is, so when the message is delivered by the messenger through a media, received and acted upon by the mass, then only the communication is effective. अगर पूरे प्रोसेस में कहीं बीच में ही रुक गया तो आपका प्रोसेस इनकम्प्लीट हो। अब तो मैसेंजर ने बहुत कुछ एक लंबा लेक्चर दे दिया 2 घंटा 3 घंटे का, लेकिन ये मास को समझ भी नहीं आया, या तो मीडिया एक बार आप देखिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट, छोटा में तो ठीक है, जो अच्छे स्पीकर होते हैं ना वो खड़े होने के बाद माइक जरूर चेक करें, जो गाना वाना गाते हैं स्टेज पे उनका कितना भी माइक चेक करके दीजिए, बट इवन देन ये जरूरी है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि 10 मिनट बोलते चले गए लेकिन वो कभी नहीं कर रहा। I cannot leave this on others. अब क्या ऑफ करके गए हैं, ऑन करके गए हैं, मुझे पता नहीं है, then I was speaking for 10 minutes and nobody could listen, nobody could hear I was speaking. तो ये सारे चीज को जब तक आप खुद ट्राई ना कर ले, श्योर ना हो जाए yes everything is in order, तब तक इसका कोई मतलब ये करना बड़ा जरूरी है। But problem is, so messenger send up and then receive it. Mass is there, so that message is going. And of course, there should be this way also. But the problem is there is a screen all around us. Screen around the sender and a screen around the receiver. Screen means barrier. सभी आप लोग बैठे होंगे, जो बेबी सोच रहे होंगे क्या चल रहा है, सुनते हैं, तो माइंड भी सुनते हैं, or maybe your voice is not reaching to that particular point, so that's okay because you are not thinking something else, that could be another barrier. My language may not be right, that could be another barrier. Your understanding may not be right. The way you understand the things, I am not speaking in that language. That could be a barrier. Maybe your culture and all other things are also barriers. So that could be many barriers. So and those are the screen. That screen is not only with the students. That screen is with the teacher also. The teacher भी वो screen से screen के अंदर पड़े हुए हैं और student भी। तो ये अगर होने के बाद क्या हो जाता है? So influence of the message quality, accuracy, clarity, age, gender, values, beliefs, culture, experience. All of these could be barriers. All of these could be barriers. And therefore, जो communication होना चाहिए था, वो नहीं हुआ. So there is sender, there is receiver, and then there are the barriers. एक ही मैसेज को यहाँ से वहां तक पहुंचाने के लिए there could be several barriers, and those barriers could be all kinds of. मैं खुश हो गया तो मैं मैसेज दे दिया था उनको। अब ये सारे barriers के कारण इनको पहुंचेंगे, उनको समझ भी नहीं आया। स्टूडेंट के साथ भी होता है, लेक्चर तो हमने बोल दिया था सब कुछ, but then because of all these barriers, उनको ये सब समझ में नहीं आया। So it could be physical separation, status difference, gender, culture, language. All of these are walls between the sender and the receiver. ये wall जब तक break नहीं होगा, तब तक आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, communication को complete हो ही नहीं सकता। And then of course there are simple equations. बोलना, सुनना, देखना, these are all very things. If only you read, you get only 10% of that. If you only hear, then 40%. If you see, 50%. That becomes 100%. तीनों चीज को अगर कोई साथ-साथ कर सकता है, then you get the complete communication. अगर एक भी छूट जाता है तो फिर वो complete नहीं होता। No, of course, this is tell me
And of course, today morning also many people talk about active, and I'm sure. उसके बाद वाले लेक्चर में आप लोग वही कर दिया मुझे सब एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग होते होते. But then this is what I do in work. So I should believe all these things. But it could be two ways: learner oriented and teacher oriented. Most of the cases it is teacher oriented. मैं जो सोच के आया वही बताऊंगा. आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या जरूरत है, आप क्या सुनना चाहते हैं, that generally we do not take into consideration. And then the whole process goes on. These are similar kinds of things of what are these windows? You heard about Joe Harris window? There are similar kinds of things actually. Yeah. So always there will be all kinds of things. Student could be knowledgeable and willing to learn. There will be less knowledgeable, willing to learn, less knowledgeable, not willing to learn, knowledgeable. All kinds of things will be there in the permutation and combination. Now it is up to your luck what kind of student you get to teach. Whether they are knowledgeable and willing to learn, then the whole teaching learning process is great. So pick up original. अगर इनमें से नहीं है तो फिर then it could be ended up with Duryodhan, Bhim and all kinds of sometimes Hitler and we do not know what to do to your students. But then all of these things are there. But that is not only for students, even for teachers also. Knowledgeable and willing to teach. They have come here. If problem है actually. Again, problem in the brain. Knowledgeable, willing to teach. Problem again that Einstein. होता क्या है? बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर. जो चीजों को बड़े आसानी से कॉम्प्लेक्स थिंग्स को समझ लेते हैं. उनका ब्रेन तो इजीली उसको एक सेकंड में उसको प्रोसेस करके रिजल्ट बता देता है. Give a very complicated mathematics. वो एक मिनट के अंदर उसको अपने ब्रेन में प्रोसेस करके उसका जवाब आता है. तो फॉर हिम और हर इट इज वेरी इजी. और बाकी जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे उनको भी वैसे ही पढ़ाया, एक मिनट में सबको बता दिया. अब वो स्टूडेंट्स आइंस्टाइन क्या हो तो वो इतना पुअर था, वो एक मिनट के उसने अगर पूरा दिन समझाते तब भी वो समझ में नहीं आता. बट देन दिस फेलो बिकॉज़ ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, उनको लगा कि ये तो इतना आसान. वो हार्ड अबाउट रामानुजन. टीचर का नाम क्या है? आपने बताया? Yes. Yes. Thomas Hardy. So after Ramanujan left UK, उनके जितने भी कॉपीज था ना, वो सारी कॉपीज को उन्होंने एनालिसिस करना शुरू किया. इसमें क्या क्या. And after death also many people did all kinds of research on his notebooks. And 99% of all the equations were done like this. वो पहले भी करते थे ऐसे. तो हॉडी ने एक बार पूछा क्या आप इसको खत्म तक करो? नहीं, मुझे समझ में आ गया कि आप लास्ट में क्या होने वाला है. तो आई अंडरस्टैंड इट नाउ. उसका हो सकता है 10 स्टेप होगा एक मैथमेटिक्स का. आजकल तो स्टेप जंप करने से भी नंबर कट जाता है. बट देन ही सेड नो, वो 10 स्टेप में जाके इसका जवाब आता. बट आई हैव डन ओनली 2-3 स्टेप्स एंड आई नो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर. सो व्हाई आई वेस्ट माय टाइम हियर? आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो सही तो एक भी नहीं किया, तो कंप्लीट नहीं. लेकिन ये उनके लिए तो आसान था. अब बाकी चीजें जो उनके ऐसे असेसमेंट करना शुरू किया, उनको दोबारा पढ़ना शुरू किया, उनको तो उसके लिए अभी भी वही इतना ही डिफिकल्ट. वो 2-3 स्टेप करने के बाद भी वो लास्ट तक पहुंच नहीं पाए. इसका जवाब क्या होगा? So still unanswered. So this is the problem with very intelligent. एक
एडिशन में somebody उनको एक एग्जाम में सवाल पूछा गया कि एक ऊंचा बिल्डिंग है, आप लोगों का व्हाट्सएप में देखा भी होगा, एक बहुत ऊंचा बिल्डिंग है, आपके पास एक रस्सी है, एक बैरोमीटर है, उसको लेकर के आप उसका हाइट कैसे मापेंगे? तो कुछ नहीं लिखा, वो ब्लैंक कॉपी जमा करके 2-3 घंटा वो बैठा रहा, इसमें क्या हुआ, एंड देन कुछ लिखा नहीं होगा तो फेल ही होगा, क्या होगा? He was prepared. लेकिन but everybody, every teacher used to know he is very intelligent student, वो फेल कैसे हो सकता है? तो स्टूडेंट को बुलाया गया, भैया तो you are so intelligent, we know in the class you are the best, but even then you have not written anything and we are going to fail you. So why did you do like this? Why didn't you answer this? Didn't you know the answer? He said, my problem was there are 7 or 8 answers for this question. ये 7-8 तरीके से इसका जवाब हो सकता है. I was thinking which one you want. और आपको जो चाहिए वो जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक तो आप नंबर मुझे दोगे नहीं. मैं वही समझ में नहीं आया मेरा. I could not figure it out. Which answer you are expecting from? कहते क्या क्या आंसर हो सकता है? I do not remember all 7 8 but just for 3. वो आंसर जो चाहते थे कि आपके पास बैरोमीटर है, आप बिल्डिंग के ऊपर में चले जाएंगे, उसका प्रेशर बदल जाएगा, कितना चेंज हुआ उससे आप so that was the answer they were expecting. But he said no, that's fine, but then there were many others. How, what are the others? There could not be any other answer. This is the answer. This is not the answer. See, easy answer. हम यहाँ से चढ़ते जाएंगे, एक स्टेप को गिनते जाएंगे और एक स्टेप का जो हाइट है वो भी काउंट कर लूंगा, then multiply करके I shall tell you this much. पर से इसको गिराऊंगा, कितना टाइम लग रहा है गिरने के लिए, that I shall measure and from there I shall calculate. So you went on saying several things. कहते the easiest one I shall tell you now. What is the easiest? The easiest one is वहाँ जो एक चौकीदार है ना, मीटिंग के पीछे. I shall go to that person. उनसे जाके मैं पूछूंगा, you know, I have got a good barometer. You know, brand new, somebody else given. I shall give it to you. Please tell me what is the height of this. कहना उस बिल्डिंग का रखवाला करना उनको तो जरूर पता होगा. तो मैं बैरोमीटर आपने दिया ना, बैरोमीटर से मुझे बताना पड़ेगा. उस बैरोमीटर and then tell me the answer. So I am using this barometer. I should give it to him. मैं पूछूंगा बताओ इसका हाइट कितना, मुझे बता देगा. That is going to the most. लेकिन उससे ज्यादा तो आप प्रेशर मापोगे, टाइम मापोगे, उसमें गलती हो सकती है, लेकिन उनका आप जो कहेंगे ना, तो गलती बिल्कुल. That's what I should do. But then, so all of these things are they are in your head. This we must keep in mind. अच्छा कब तक खत्म कराना है इसको, समझ देना. ये आप तो कर जिनको समझना है. तो ये your enemy. टाइम नहीं है बता दीजिए. अरे just I'm okay. तो आपका अटेंशन कब तक रहेगा और क्यों रहेगा? That depends upon information load and involvement. If it is very simple kind of, जैसे कोई मूवी देख रहे हैं, वहाँ भी कम्युनिकेशन, वहाँ भी मैसेज आता, बट देन उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं होता, आपका इन्वॉल्वमेंट भी लो है, तो ऑलमोस्ट एवरी ऑडियंस विल बी वीक, एवरी स्टूडेंट विल बी वीक. इसमें इंफॉर्मेशन तब भी ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं. जैसे टीवी में कोई एंकर है, न्यूज रीडर है, तो देन अगेन नॉट सो मेनी बट देन लार्ज नंबर ऑफ पीपल. हियर इट इज इंफॉर्मेशन भी बहुत कम है, बट इन्वॉल्वमेंट चाहिए आपको समझने के लिए. लाइक सेमिनार which we are doing, then we still if you are dealing with something which has got high information, very difficult science, and it needs your involvement, complete involvement. ये तो समझ में आएगा नहीं. If you are dealing with very classical science with equations, then there are only few जो आपके साथ. So the point is
If, because all of us will do this kind of thing only, or maybe somewhere like this. If you can make this into this, वो जो complicated चीज था, उसको अगर आप break करते 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 छोटा करते करते इतना simple आपने बना दिया कि इस level पे आ गया, then everybody will do it. And that is the beauty of a good teacher. उस complicated चीज को ऐसे करेंगे उसको कि इतना simple कर देंगे उनको, तो वो लगेगा अरे थोड़ा आसान. Then everybody is doing. Otherwise, you will only one or two students, and others will be simply sleeping. And of course, this was I was talking about that there were several ways of communication, teaching, symposium, whatsoever kind. You know, we many times we use these words in a very similar way, as if these are synonyms. But all of these are different. Seminar is not conference. Conference is not workshop. Workshop is not symposium. It is not panel discussion. It is not a group discussion. These are all having different meanings. आप लोग कब पढ़ के आएगा order the difference. And of course there are many abuse जो मैं उस समय प्लेटो के बारे में बात कर रहा था. All these kinds of things. Some of these differences. Yeah. How teaching process evolved. All of you know very well. All these guru, shishya, parampara, everything. So I should simply leave. All of this you know very well. How all these things came, and now was ICT, next generation, all of them are so intelligent and running only from computers. And of course now e-education, the Dragon might have told you so many things. What the way goes with. And this is of course something all of you know that good teacher, bad teacher, what kinds of teachers we discuss in the morning also. Lecturer, reader, professor, all different kinds of definitions. This presentation will be this, so you can go through this. This is what we have to remember. जब भी आप लोग कहीं lecture देने के लिए जाए ना, so please remember. Yeah. और students को देखते रहिए. हम लोग ज्यादा करना इधर ही देख के, आप इधर देख रहे हैं? तो इसलिए मैंने एक बार इधर नहीं देखा. आई एम जस्ट वॉचिंग यू. और फिर आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप सो नहीं पाते. थोड़ा सा मजबूरी तो यही है, क्या करेंगे. But this is actually the best way to control the audience is giving them a good lecture. Like मेरे को समझ में आया, appreciate करें, they enjoy, they feel good about it. So good teaching का good concept, organized content, good quality and optimal quantity, sequence, relevance, learner oriented, all of these things you know. Could be different kinds of things, good teaching and so on. Just I shall give you only 5 points now. This is again, you know, we use PowerPoint and everything. PowerPoint can, there are several good advantages, but if you do not use PowerPoint, you know, many people will be writing so many things in the slide की देखने के बाद ही आपको नींद ऐसी आ जाएगी. So if you do not use them from something like this, I should just simply give you only 5 points here. How to excel in. And these 5 points I request you to, you can note it down. Or invariably, please follow this in your teaching. Okay. If you follow these 5, it's not a great teaching, but certainly good teaching will come. First step is induce. I shall tell you what is induce. Induce. Second one is introduce. Third one is stimulate, reinforce, summarize. जब भी आप किसी क्लास में जा रहे हैं, these 5 अगर आपने इसको ध्यान रखने के आपने 5 स्टेप किया है कि नहीं किया, if you have completed all these 5 steps, then you can be sure that if not a great teaching you have done, but certainly a good teaching you have done. So induce means the moment you enter,
The students are in a different mood. Their wavelengths are different. They are like you. The whole day you have been listening all these kinds of lectures. So spend some time, bring them to your way. चाहे उनको हंसाइए, चाहे बात कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, something different, not the topic. ताकि वो कम से कम आपके साथ एक wavelength. So this is the induce. So induce. Then you must do what you call as introduce. फिर आप जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं, whatever you are going to teach, you introduce. You must be informing me what you are going to do today. You must tell me what is the objective of your topic. What is going to be the output of or outcome of the topic. You should not be blackmailing me. एक क्लास का लास्ट तक मुझे समझ में नहीं आया कि आपने वो असल में जानबूझ के आप लोग को ब्रेक मिल जाए. So then you introduce that. You cannot keep me in dark. लेक्चर भी खत्म हो गया, मुझे समझ में नहीं आया कि उसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टॉपिक क्या है, ये तो कम से कम समझ में आ जाना चाहिए. Then of course stimulate. ऐसे भी हो सकता है. Keep an eye. अगर आपको लग रहा है कि सब now they are sleeping, so you do something different. Maybe totally out of that. क्योंकि अदरवाइज आप नेक्स्ट आधा घंटा बोलते जाएंगे तो किसको सुनना है, अगर नहीं है तो आधा घंटा क्यों यहाँ खड़े होंगे, क्यों आप वेस्ट करेंगे. एंड देन ऑफ कोर्स रीइंफोर्स. बहुत चीज बोलने का जरूरत नहीं है, जो भी आपने अभी तक बताया उसको दोबारा बार बार उसको रिपीट कीजिए. रिपीटिंग इज गुड. बहुत ज्यादा बोल गया, इतना बोला कि उसमें वो स्पीड जो है कि बिल्कुल सुपरसोनिक. And you thought that I have shared lots of information. That has got no meaning. That has no meaning. You remember, जब भी आप लोग क्लास में जाएंगे, remember अटल बिहारी वाजपेयी. इतना ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है. दो चार शब्द बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि बस. होता क्या है ना, अगेन ब्रेन. Everybody's brain is not so fast as your brain. आपने जो मुझे अब तक बोला उसको प्रोसेस करने के लिए ब्रेन हैज टू टेक सम टाइम. वो जो जितना लेस इंटेलिजेंट उनको उतना ज्यादा समझ लगता है उसको प्रोसेस करने के लिए. अगर प्रोसेसिंग के लिए आपने टाइम ही नहीं दिया तब तक सेकंड सेंटेंस आ गया, फिर थर्ड सेंटेंस, फिर फोर्थ सेंटेंस, इतना स्पीडली बोल दिया कि वो मेरा ब्रेन तो उसको प्रोसेस ही नहीं करता और आपने पूरा खत्म करके चले गए. देन करवाइए. एंड देन लास्ट वन इज समराइज. बोलिए जरूर ये चीज आज हमने डिस्कस. These are 5 points which you also do. Things which must be avoided. And invariably we shall commit all these mistakes. हम आते ही बोलेंगे सॉरी मैं कहीं देर हो गया, या सॉरी मैं तैयारी नहीं कर पाया, घर में पता नहीं क्या क्या हो गया, मेरी दोस्त थिंग्स आर देयर, लेट देम बी. कोई जरूरी नहीं उसी चीज को बोलना है. बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं जो मैंने आपको अभी.
Never criticize the cultural and emotional issues. You do not keep your ideas on that. You might be having some kind of philosophy, but that may not be accepted by you. उसको पर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है. Very proof, very strong है. Do not एक कॉन्फ्रेंस में खास करके 4 महीने के साथ तो कभी नहीं. अगर 100% गलत भी हो जाए, जनरली हम लोग का क्या होता है ना कि आपको 20 मिनट का समय दिया हुआ है और योर प्रेजेंटेशन, और लेट तो ही जाना है. पहले वाले को 20 मिनट दिया था, उन्होंने खत्म किया आधे घंटे में, और फिर तो आप 20 मिनट की तैयारी करके गए हैं, खड़े होते ही 4 दिन आपको बोलेंगे you have got 10 minutes. आप कुछ लोग तुरंत रिएक्शन शुरू, नहीं 20 मिनट दिया गया था. I have seen one presentation जिन्हें वही 20 मिनट दिया गया, चेयरमैन साहब बोले 10 मिनट आपके पास, because we are running late by 1 hour. And the presenter started arguing. He argued for 10 minutes. The chairman साहब ने बोला, very strict chairman. The time is over. Next person. But then there are few points to be good listener. And let me tell you, today all of you are not only good listener, you are the best listener. ना अच्छा listener मेरे बहुत कम देखा. हम सब हम लोग का conference में तो इतना अच्छा listener देखने को नहीं मिलता. Again, there are several things, but few things which I shall tell. Always try to have eye contact. Even if you are not understanding or appreciating something, this eye contact is very important. The moment आपका eyes the speaker से हट गया, you have given a signal that whether you are not interested or this is totally useless, something is happening. And similarly the speaker also. Eye contact कभी भी जाना नहीं चाहिए. Unfortunately, most of our time will be simply इधर ही देखना है, वो यहाँ है या नहीं है, बीच में अगर सब उठ करके चले भी जाए, so the person will not understand the guys of the university. But then there are anyway there are several other points in go through, and then final points. Final points are like this. To speak from mouth to reach only to your. To speak from head will reach to head. Speak from heart will reach to. Really love the subject. ये एक्टिंग से नहीं आता. इतना भी कोशिश कर ले. If you do not like the topic, love the topic, and if you do not like the students or audience, ये लास्ट वाली बात तो हो ही नहीं सकती. और ये लास्ट वाली बात जब तक नहीं हो सकता, तब तक वो टीचिंग या कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं सकता. इसलिए बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है. Very less knowledgeable person, but they are considered to be excellent. Highly skilled researchers, lot of papers, nature, science, everything, but then don't like. क्योंकि ये वाला चीज उसमें से मिस हो जाता. This is something you can really understand and apply when the job is done. And then again, what many orators do, speak to the thousands at once, yet speak to the one. होता क्या? आप कुछ जो रोड साइड में होर्डिंग्स देखे आपने? आपको भी देखते हुए जाना, आप क्रॉस कर रहे हैं, you will feel that the picture is looking at you only. The same next person is also thinking. अगर उसमें हजारों लोग हैं, सबको लगता है कि वो, so that's of course, art technique tools. But then here, one person cannot see each one. I am also seeing only one. But then everybody should feel कि टीचर तो मुझे भी देख रहे थे.
उनके एजुकेशन में मेरे ऊपर थी। That realization must come कि वो केवल नहीं यहाँ बैठ के तो केवल only talking to one person. So at one point of time, I'm talking to only one person in terms of the holy sector. But then everybody should feel that yes, I was the person to whom he was talking. And everybody should feel that yes, I was the person to whom the speaker was. Speak to touch the emotions of your patient. That's what which we teach. Therefore, wish you all excel in teaching. All of you will do that. Thank you. कोई time है नहीं। Suddenly remember something to ask and do that. That was something to share. That you can do today or tomorrow. I'll be around. That is going to be your problem. I am going to be around. So maybe tomorrow morning also I'll be here. Yes, Padai. The only one question now is so many gadgets are there because of this social media. And often they are very good communicators when students can access. So that makes it more challenging. So how do you cope with that? Because they have instruments to deal with better instruments to deal with in their video. So to match with that, how सारे things तो है तो करता है. Technology has got something nobody can deny it. और हमें कम से कम उस लेवल तक हम नहीं पहुंच सकते because they are all highly qualified, highly skilled. But कुछ ना कुछ tools techniques तो हमें भी यूज करना पड़ेगा. तो पहले जैसे आप वो कितने हुए नोट लेकर के आप क्लास में चले. And recently in 1950 वो भी नहीं हो सकता. उस समय तो इसका कितना हो गया बट ये लोग today also it is recently हमें अपने से परिचय करना है. Okay, friends, it was really great talking to all of you. Thank you very much for being so good visionary. Thank you so much, Yeah. sir. Thank you. It was really very spellbound. But simple and very effective. Very effective. Thank you so much.